Hey, good evening दोस्तों. How you all doing this fine Tuesday evening? कैसे हैं सब लोग? आवाज साफ आ रही है? You able to hear me clearly? You should to see me right about now. How you doing? Thank you for joining in early, guys. Life-changing true lines. Oh, Biswajit. Hey, Naruto, Asma, Arul Raja. Raja, is that the same Raja as before? Oh, Raghav, what's up? What's up? Good evening. आवाज साफ आ रही है? All good? All good? See, हम लोगों ने फ्राइडे वी मेट लास्ट ऑन फ्राइडे एंड आई नो वेरी ओवरवेलमिंग डे राइट. वी डिड हमने सेशंस कुछ किए सैटरडे को. वी हैड अ गुड टाइम. वी डिड सम मोर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बट अ लॉट ऑफ यू टेक्स्टेड मी एंड थोड़ा पैनिक मोड में सब लोग हैं राइट. बिग चेंज बाय एनएमसी. मतलब नीट का सिलेबस प्रैक्टिकली बहुत हद तक बदल गया है राइट. Yeah, and I thought let's just talk about it. Let's get into detail as to what has changed. You have an idea already, but putting it all in one place and coming to you with a plan of how are we going to help you? Yeah, at Aakash BYJU'S, what's the whole deal, right? How can we help you? Because that's what you're here for. So focus as usual is this, yeah, syllabus update, etc., etc. These are the points I'm going to cover right now. Okay, the last point being the most important one. How do we prepare together for NEET 2024? Hey, Doctorian, Mahi, Lucy, Divankar, a lot of old faces, a lot of new ones. Sushmita, Dr. Mahi, good evening. How are you all doing? So let's just talk how you're feeling right now. Just to start off, yeah. I know काफी कुछ लोग panic में गए थे. A lot of people who are giving the exam were repeating the exam, right? उनको लगा यार ये तो scoring chapters बहुत निकल गए. I understand your feeling. But let's look at glass half full, right? Literally मेरे पास पानी ग्लास यहाँ पे पूरा भरा हुआ है. But look at things glass half full. कम पढ़ाई करनी पड़ेगी. You can focus on other things. You can focus on more bio, focus on more physics, focus on other chemistry parts that are easy for you to score. क्या क्या गया? We'll talk about it. आपको ऑलरेडी मालूम है, yeah, but you're still here. आपको दिलासा चाहिए कि we got you covered and that's what we're here for. ठीक है? So let's get started right away. Hey, good evening. I'm great, Mahi. How are you doing? But how are you feeling really? मतलब आपके मन में क्या है? How does this all feel? कि couple of months बाकी and suddenly things change for you. Are you guys a little bit worked up or are you good? Like you've got a good support system at home and you're talking things through and you're able to figure it out. I know this is a big deal. I'm not playing it down, right? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है because suddenly 6 महीने बाकी है, 7 महीने बाकी हैं and things have changed. But that's what life is about, यार. You got to adapt to change. क्या करें? ठीक है. तो first I'm going to talk about old NCERT, man. There are three things happening, right? A lot of things are changing. NCERT पुरानी थी, फिर NCERT नई है, और जो NMC का अपडेट था, it's somewhere in between both of them. So we'll just put everything in one place, at least for chemistry. And I'll give this to you. Telegram पे आप इसको रख सकते हैं so that if you forget कि कुछ miss हो गया या कुछ whatever, you have this. You already have the NMC का document, but I'll give you this as well. ठीक है? So पुरानी NCERT में क्या था? You're in 11th, okay, Dr. Mahi, that's great. Okay, Preeti, hi, what's up? Biswajit, yeah, I remember. Yeah, D25, Divakar, क्या बोलूं आपको? D25 में होगा. 2025, that's all I can say, right? You've got time. That's good. It's good if you're giving your exam 25. It's good if you're giving 24. Wherever you're giving an exam, right? कभी भी this is useful for you. For now, focus obviously is on your friends who are giving it in 24 right now, right? So, पहले 23 से पहले 11th standard में क्या-क्या chapters थे? You know all of them, right? We call this mole concept. Same चीज है यहाँ पे. Oh, yellow तो यहाँ पे दिखता ही नहीं है. Color बार-बार बदलना पड़ेगा लग रहा है. This is mole concept. Nothing fancy here. We are doing a lot of practice sessions, okay, on all of these things as well. हम लोग इस पे कर रहे हैं. We have done this as well. Can you know all this? But what changed? Updated NCERT में क्या हुआ? काफी chapters निकल गए, right? Firstly, look at that. States of matter went away. Hydrogen went away. S block went away. पूरा P block निकल गया. And और क्या गया? Environmental chemistry गया. That's how 11th grade NCERT changed. Maybe you already know this. But here is the interesting thing. NMC they brought back some of these things, okay? What did they bring back? Okay. So this is what it was. But they said, P block is there. Thoda sa hai, thoda sa nahi hai. We'll go in detail as to what is there, what's not there. Okay, we'll go in detail. I told you on Friday when we left a little hanging कि यार P block का लग रहा है कि पूरा P block हट गया है. That was very exciting. Exciting in a way that it could be difficult, scary, but definitely exciting. कि बहुत बदलाव है. Okay, P block में there is definitely a change. Is what it seems like right now. Okay, we'll wait for things to pan out. But हमारे पास clear cut है जो क्या बदला है. We'll get to that first. P block का sort of, but ये वापस आ गया है. Purification, characterization of organic compounds. In a very interesting way. We'll talk about that as well. Good evening, Mohammed Adil, Lucy. I'm great. How are you all doing? So, just practically, this is going to be a short session, okay? I just want to talk to you to see how you're doing and make sure you understand that we've got you covered. और हमारा plan क्या है to address this NMC change. That's the main idea, yeah? We'll meet again at 7:15. हम लोग आराम से detail में बड़ा सा session करेंगे. We're starting off right away. No gap, okay? हम लोग 7:15 को मिलेंगे. We'll start qualitative analysis, which is part of practical chemistry right here. But before that, what is it that you have to do? Okay, maybe
you want to have an alternate, you want to get some books maybe because you feel that NCERT से कुछ बाहर भी कुछ चीजें, which is true, NCERT थोड़ी बाहर चीजें हैं. खैर 11th में ये हुआ है, ठीक है. 12th में क्या हुआ है? 12th में बहुत चीजें निकल गई. सॉलिड स्टेट मुझे बहुत प्यारा लगता था, प्यारा सॉलिड स्टेट निकल गया. पूरा मेटलर्जी, सर्विस केमिस्ट्री, मेटलर्जी जो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, all of that went away. And what is even more fascinating is that the whole of P block elements part 2 went away. NCERT की बात कर रहा हूं मैं, okay? I'm not talking about NMC right now. NCERT, yeah, that's my heading right now. And well, polymers and chemistry and every life भी चला गया. But again, NMC did something interesting. They brought back P block, but with a star, with a bit of a condition. What that condition is, हम लोग को खुद साथ में figure out करना पड़ेगा, ठीक है? There are guidelines, and I'll show you the guidelines. And this is entirely new, जो पहले था ही नहीं नीट में. I checked with a few students who are here, who are regulars over here, right? Absolutely, Mohammed Shifaji. They're working it out. I can tell you with confidence they're working this out. Okay, I just spoke to some folks who have given me an idea that yeah, things are definitely going to change. Okay, Raghav, hey, good evening, Shalini, Neet, good evening, everybody. सारा का सारा बेसिक चैप्टर ही रिड्यूस कर दिया. हाँ राघव, आई अंडरस्टैंड, आई फील योर पेन कि बट देखा जाए तो आई मीन एक तरीके से देखिए, ग्लास हाफ फुल वे ऑफ लुकिंग एट, राइट? आप जा रहे हो डॉक्टरी करने, अब डॉक्टरी करने में अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स मे नॉट बी यूजफुल, बट ये बोला कि भाई ये बाकी चीजें भी यूजफुल नहीं है, बाकी चीजें यूजफुल है. मैं आपको बार बार जब भी आपको पढ़ाता हूं, इफ यू रिमेंबर, बाय द वे, व्हेन वी डिड DNF block, in fact, you know, when we did solid state or metallurgy, I gave you research papers. If you haven't seen those things, I gave you research paper where those things are useful, especially DNF block में जो catalysis में parts है, it's very very useful in the whole field of medicine. Okay, so maybe we don't see it right away, but if you choose biology in research, not just medicine, right? If you go to ICER, if you go to other things, then all of these chapters that have remained, they are very very useful. Okay, but जो हटा दिए गए हैं, they also could be useful in your journey later on, but अभी हटा दिए गए तो let's celebrate kind of कि यार ठीक है, चलो अच्छा कम हो गया, थोड़ा कम पढ़ाई करनी पड़ेगी. Glass half full, right? Glass half full. All right. Hindi plus English, ठीक है, जरूर. Nucleus, we'll do whatever you want. If there's something you don't understand, let me know. I'll repeat it. ठीक है? कन्नड़ा में बात करेंगे अब. बढ़िया बढ़िया. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು. Okay, that's it. ठीक है. Anyway, let's focus on what we have at hand here. Okay, I don't want to spend too much of time on this. You know what's happening, but my main goal is to tell you how we've got you covered. Okay, so what's new is this principles related to practical chemistry. Definitely है. Can we expect a new package? I mean, this idea of new Faisal will definitely do what is relevant for NEET. Okay, Aakash has always got you covered for NEET. We'll have you covered now as well. Okay, for sure. This new package, I don't understand what you mean by that. You can maybe write to me on iTeachCam and I can forward it to the respective authorities. For sure, I'll do that. iTeachCam on Telegram. That's what I use. Telegram and Discord. You can feel free to ping me there. I'll direct you to the right resources. हाँ यार, I know Biswajit, life मुश्किल है. I know. That's why I said कि जो लोग repeat कर रहे हैं exam में, they feel a little cheated. I understand that. I would too if I was in your shoes, right? But that's what you do. Life में when give you lemons, you make lemonade. I'm honestly just here to talk to you in this session, right? And also tell you कि what we have planned for you in the coming things. But I understand it's a big shock. बहुत चीजें बदली है, right? I did not understand the gravity of it while I was doing the session. उस समय तो adrenaline था, and we did a session, we spoke, we had some fun. But I thought about it, yeah, and then a lot of you texted me saying this is going to change things a lot. So what's changed? What's changed? ये तो chapters, but actually बदला क्या है? Reality में what is it that has changed for you on the ground, right? Let's talk about that. NMC पर कितना शिफा जी, शिफा, is that your name? मोहम्मद शिफा? शिफा जी, भरोसा तो मतलब they are the ones who are suggesting things, right? They are giving guidelines for NEET. So I think that's it. And the reason why we took a couple of days to come to you with this session to say for sure कि यार things have changed is because वो site खुल ही रहा था. वो मैं somehow it opened for me. 5-7 मिनट तक वेट करके वो PDF आ गया था, मैं आपसे तुरंत शेयर कर दिया था. But we wanted to collectively be sure, like get 3 or 4 verified sources. भाई, this is it. अब site सबके लिए खुल रहा है. Now if you go to the NMC site right now, open it up, you see that NEET UG वाला update वो है. So it's definitely there. It's definitely there. Yes, Biswajit. अब आपका सवाल is an opinion, right? तो उसको मैं आपको दिलासा दे सकता हूँ कि we have got you covered. But why not prefer CBSE and NCERT? तो मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने. मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने. देखिए, एक पैरल मैं आपको देता हूँ. I'll just cover this stats वाली चीज, then I'll give you a small parallel. ये stats वाली छोटी चीज है, let's just get over it. ये stats में एक छोटी चीज important है, which is कि look,
द डिफरेंस इज दैट ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, एक दो चैप्टर का ही फर्क है विश्वजीत, एज यू आर सेइंग एक दो ही चैप्टर का फर्क है. यू कैन सी दैट जस्ट विद दिस नंबर. ओके, ऊपर ऊपर से बर्ड्स आई व्यू से दिख रहा है कि क्लियरली इज जस्ट वन और टू चैप्टर्स. व्हिच वन और टू चैप्टर्स? यू नो, इट्स पी ब्लॉक, राइट? पी ब्लॉक में क्या है? लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर. Yeah, Mantesh, but I would put an asterisk over there. I would always say NCERT is the best for NEET, but now कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई NCERT के बाहर कुछ चीजें, right? Unless they release a new NCERT, which we'll see if they do that. पता नहीं है, you know. But here, what do we have? Some chapters are removed, modified, etc. सब चीज का नंबर दिया है. Now, this organic chemistry, some basic principles and techniques is split into two, okay, in the latest NCERT. Also, ये प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली न्यू है एंड हम लोग का फोकस इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इज गोइंग टू बी टू कवर दिस पहले. ठीक है, आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द 11th स्टैंडर्ड. आई विल ऑलवेज हैव सेशंस फॉर यू एज वेल इन 12th. माय पर्सनल फोकस इज टू हैव यू कवर्ड ऑन दिस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वो बिल्कुल नई चीज है, वो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. सो आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड सपोर्ट फ्रॉम दिस एंड आई एम हियर फॉर यू फॉर दैट. व्हेन आई से आई मीन ऑब्वियसली आकाश बायजूस नीड. ओके, और ये देखिए लास्ट वाली पॉइंट, पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18, एक उसका शब्द ऐसा यूज किया गया. I'll show you the words also actually. हाँ शिफा जी, I feel so, right? And that's why I'm here to guide you there. Hey Asta, that's amazing. They will do this for sure. Megha, congrats on being the topper. That's beautiful. That gives me goosebumps. That's so great that you're here and you're watching the session and you're doing very well in your studies. They're discussing these things and they'll come to you with an update really soon, right? But here on the channel, we are going with what we can do in a small bit. Right now, what I can help you with right now, I'm doing, right? In a large scale, जो पूरा आकाश का ecosystem है, they will come to you with an update with exact plans on, okay, इस डेट पे ये टेस्ट होगा, वो होगा, whatever it is, you know, because that a lot of moving pieces. मैं थोड़ा और free हूँ, right? In the sense that, look, I can come chat with you. Unplanned हम लोग रात को Friday को मिल गए session में, है ना? So that's the beauty of YouTube. All of you are here, and I can talk to you directly, and I can take your feedback. It's amazing. So it gives me a little bit more freedom to just chat with you right away. Okay. And I'm telling you, here, we are here for you. Wait for a couple of days. You will get official responses from Aakash, which is us, right? On everything. Okay? Anamika, great question. I'll get to you about surface chemistry and analytic chemistry. हम लोग उसी की बात करने वाले हैं. ठीक है? I was just taking Megha's question. All right. Okay. But yeah, that's great that you're here. Hey, oh great, Sunio from Aakash Patiala, beautiful. Hey, Deepanvita, some familiar faces here as well. Okay, so this is what मैंने थोड़ा सा स्निपेट लेके यहाँ पे लिखा है, मेरे दोस्त ने लिखा है, विभव. Amazing man, he made this presentation ready really quickly. It was amazing. So P block elements 1 में it says that just study the general introduction. अब देखिए, I'm saying this with a pinch of salt, and this is just an interpretation of not interpretation, मतलब exactly जो लिखा है वही हमने यहाँ लिख दिया है. वहां पे लिखा है कि भाई सिर्फ आप पहले रो के बारे में पढ़ो और जनरल आइडिया लो. मतलब ऑल द बड़ी बड़ी चीजें जो ऑक्सो एनायंस थे, वो सब चीजें पी ब्लॉक 2 में थे. पार्ट 1 में तो ऑक्सो एनायंस नहीं है, बट सारे कंपाउंड से, मतलब मैं एक्चुअली इसी की तैयारी कर रहा था. आई वाज गोइंग टू टीच यू दिस वीक, बट आई डोंट थिंक वी हैव टू. अमोनिया, दिस दैट, सारे जो कंपाउंड्स है वो पी ब्लॉक 2 में. पी ब्लॉक 1 में जो भी कंपाउंड्स है, बोरॉन के कंपाउंड्स एक्सेट्रा, मे बी मोस्ट लाइकली दैट्स नॉट गोइंग टू बी देयर. गिव अस अ फ्यू डेज टू फिगर दिस पार्ट आउट. ऐसा अभी लग रहा है कि दिस इज इट फॉर नाउ. Give us a few days to figure this part out. But this is what we feel right now. Okay. दूसरी चीज, and this is not a big deal. Okay. This is not a big deal at all. ये stereoisomerism haloalkane से मूव हो गया है. Okay. To 11th standard. मतलब 12th से 11th. वो तो मैंने पढ़ाई आपको. यहाँ पे जो हरा लिंक दिख रहा है ना, when you download this PDF, you'll have to click on that and stereoisomerism आप चले जाएंगे. If you see the description of this video, उसमें भी stereoisomerism है. ठीक है. So, जो भी हरा हरा highlight है इस सेशन में, you can click on the link in the description and go to that video right away. Okay, so कुछ नया नहीं है. Do not panic, please. That's what I'm here for. Okay, let me just quickly look at chat if I missed anything. Cricket भाई, आइए यार. Come to a session, see if that helps. You are at Aakash. Reach out to your teachers. I'm sure they'll help you. Come here. We'll try our best as well. All right. Okay, Shifa. All right. That's great to know that Aakash जनकपुरी में reduce वाला ही पढ़ा रहे हैं. And future maybe, yeah, reduce वाला ही देंगे. Full test में, FT full test. Okay, great. A lot of lingo there. Okay, great. Cool. ठीक है. तो stereoisomerism has been moved to 11th from 12th. पर हमने अभी cover किया ही था. It's all right. तो on this YouTube channel, you can check it out for sure. Okay. P block element part 2 is very similar to part 1. मतलब कि यार देखो, उनका जो है some important compounds mentioned ही नहीं है. मतलब वो पूरा कहानी जो थे, सल्फर के ऑक्सो एनायंस बनते थे, क्लोरीन के बनते थे, जेनॉन के कंपाउंड्स बनते थे,
वो सब हट गया है, ऐसा लग रहा है। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ दिस, बट अगेन हम लोग कदम फूक फूक के रख रहे हैं बिकॉज इट हैज बिग इंप्लीकेशंस। दैट मींस कि बहुत ज्यादा हद तक पी ब्लॉक है नहीं। ओके, आई एम सेइंग इट ओपनली, बट गॉट बी लिटिल केयरफुल विद दिस। We'll give it time to figure out इसको how to navigate this. Okay, but what is easy to navigate, we'll do that first. What is easy to navigate कि भाई एक coordination में थोड़ा छोटा part हट गया है, right? The easiest thing to navigate is yeah, obviously एक छोटा सा point कि if you go to this stereoisomerism वाला chapter, right, you'll see कि in the description these links of all the chapters of are there over there. Just a small thing, and notes भी दिए हुए हैं. These are all the previous chapters I've already done. Khair, so how do we prepare, right? That's the main idea right now. You guys have any question, anything you want to talk about? Revised syllabus? Deepanvita, I really hope not. I mean, that will really increase your burden. I personally hope that doesn't happen, man. Deepanvita, really hope that doesn't happen. I really hope कि जो अभी प्लान बना है, that is what goes ahead. I know यार, क्रिकेट एडिक्ट्स, भाई हम लोगों ने कितने मजे से पूरा सरफेस केमिस्ट्री किया था, मेटलर्जी किया था, सॉलिड स्टेट के हम लोग बहुत मजेदार सवाल कर रहे थे. आज these guys here, people who are regulars on this channel, we had a lot of fun with all of that. But क्या करें, लाइफ में ऐसी चेंजेस होते रहते हैं. We got to adapt, right? We got to adapt. Yeah, exciting है, मुश्किल है, but exciting जरूर है. ठीक है? So let's look ahead. How do we prepare? हम लोग साथ में कैसे करें? When I say we, it's 99% you. ठीक है? 1% is me giving you confidence that you can do it. I think that's all the role of a teacher is, right? It is 99% you, your confidence कि भाई हम कर लेंगे, and your effort, your hard work. But I'm giving you that confidence. That 1% का मैं I'm here to help you that. Okay? क्या करेंगे? तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में देयर आर सम थिंग्स दैट लुक अ लिटिल स्कैरी, राइट? फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, अल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अमीनो ग्रुप्स. आपने ये शायद लैब्स में पढ़ा होगा, फिलिंग्स रिएजेंट या टॉलिन्स रिएजेंट. खैर, एनीवे, वील कवर इट, डोंट वरी अबाउट इट. या, हैव कॉन्फिडेंस इन अस. वी हैव बीन टीचिंग दीस टॉपिक्स इन जेईई फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी विल टीच व्हाट इज रेलेवेंट हियर इन नीट एज वेल. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, हम लोग जरूर करेंगे इसको. ठीक है, वील डू दिस. व्हाट इज न्यू is a couple of things, छोटी छोटी चीजें. more salt and potash element, no big deal. दो कंपाउंड है, आप बायो इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, एक दो कंपाउंड और पढ़ लें, कुछ नहीं हो जाएगा. ठीक है? यस दीपान्विता, रिमूव्ड मतलब थोड़ा सा रखेंगे, बट या बाय एंड लार्ज वो जो कंपाउंड वाला पार्ट था, एक कंपाउंड के बहुत रिएक्शन, इस कंपाउंड दैट लुक्स लाइक इज नॉट गोना बी देयर. दैट लुक्स लाइक नॉट गोना बी देयर. या, कूल. सो दिस इज डूएबल. वील कवर इट, वील कम अप विद अ प्लान फॉर दिस. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यू नो, 7:15 पे एक सेशन है. वो किस चीज का सेशन है, we'll talk about that. But before that, कुछ और भी चीजें यहाँ पे लिखी है. acetanilide, acetanilide. Oh my god, I'm bad at pronunciation. Paranitroacetanilide. No, how do you pronounce this? Anyway, help me with that. Iodoform, etc., etc. Good evening, Richa. What's up? What's up? Yeah, Biswajit. I know. Life is hard, but we move on. ठीक है. Now, this titrimetric exercises, ये शब्द बहुत बड़ा लग रहा है, बट देखो ये भी हम लोग कर चुके हैं. There is a YouTube link that's coming up over here on my screen. You see that? और आपको नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, ये हरा वाला लिंक है. ये तो हमने इस पे सवाल किया है. In the fourth session of DNF block, we have done this exact thing. Okay, and also ये है DNF block में डिटेल में. ठीक है, in L3 MnO4 minus पूरा आंसर, सब लिंक्स इस पे हैं डिस्क्रिप्शन में भी. You can go and check it out. Please do not panic. ये देख के मत करो कि अरे ये नई चीज आई, नहीं चाहिए. कुछ नई चीज नहीं है. It's just that ये यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर था, and it's all come together. Okay, that's all. Yeah, cool. Okay, ठीक है. What are we going to do right after this? 7:15 हम लोग क्या करने वाले हैं? We're going to look at qualitative salt analysis. Okay, these things, trust us, we are good at. Okay, हम लोग जेई में, मैं पढ़ चुका हूँ जेई में, मतलब मैंने जेई दी थी 2006 में, तब से ये चीज पढ़ाई जा रही है. तो there's a standard way of teaching this. Okay, don't worry about it. We've got you covered completely on salt analysis. और उसका पहला सेशन हम लोग लेंगे 7:15 बजे, less than an hour away, right? And it's got a lot of things that looks like there are beautiful things over here. Cations का सेशन आगे होगा. For this you'll need a little bit of ionic equilibrium. ठीक है, किस पार्ट में there will be some common ion effect happening here between these things. KSP का थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा पढ़ लो, मजा आएगा. ठीक है, we'll start with this anions वाले. काफी anion है. There are some groups that get formed. This is group 1. Let me put one here, and ये है group 2, and ये है group 3. खैर एक और भी है, NO3 माइनस भी है. खैर anyway, ये सब हम लोग आराम से करेंगे. इसमें NO3 माइनस शायद लिखना यहाँ पे मिस हो गया है, but I think NO3 माइनस भी था. या NO3 माइनस भी था उसमें स्क्रीनशॉट में. Let me quickly look at the chat before we do this. हाँ, लोगेश, बहुत अच्छा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है.
यू आर हियर एट द राइट टाइम. वी आर गोइंग टू क्वालिटेटिव एनालिसिस 7:15 पे हम लोग करेंगे. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वील स्टार्ट ऑफ विद दिस. आई एम थिंकिंग देयर वील डू 3 or 4 सेशंस डिपेंडिंग ऑन आपकी पेस क्या है, राइट? वील फिगर इट आउट. या बट आई हैव सेशंस प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वील फिगर दैट आउट आराम से. ठीक है. Yes, absolutely. Cricket addicts. Beautiful, beautiful question. Cricket addicts asking if JEE practical chemistry में सेम सवाल आते हैं. रेफर कर सकते हैं, जरूर करो. Hard. Sandeep, no problem. Good that you're here. Good that you're here. Yeah, let me just quickly look at the other comments. Ma'am. अरे बाप रे. यार EB, I don't know यार. I'm sorry, but please यार spam मत करो यार. EB, I may have to mute if you spam. Please don't keep sending. It's difficult for me to read the other comments. दीपान्विता वेरी होपफुल. शी इज सेइंग कि फिर से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हटा दे. दैट विल बी गुड आई गेस. हटा दे तो अच्छी बात है, बट तब तक पढ़ लेते हैं, मजा ही तो आएगा. बहुत सिंपल चीजें हैं, ट्रस्ट मी. अरे यार, यू हैव स्टडीड विद मी दीपान्विता, राइट? यू नो द वे वी डू सेशंस, दे गेट ओवर इन अ ब्रीज. एंड ठीक है, अगर इफ दैट हैपेंस देन यू अटेंड माय क्लास एंड यू आर डन विद इट. अगर एक्चुअली टेस्ट में करना पड़ा तो एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? यू हैव टू मेक स्कीम्स. यू गाइज विल एब्सोल्युटली लव क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्यों? क्योंकि बहुत ही प्रोसीजरल है. You have to follow steps in a particular order, and if you do that, you will get the result. That's how qualitative analysis works. I loved it. मैंने स्कूल में किया था. वो इतने कलरफुल चीजें दिखती है ना, जो लिखा है एग्जैक्टली वैसा होता है. When have you ever seen that in chemistry, right? In a lab, अगर आपने कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जो करो ये हो जाता है, वो हो जाता है. बट अगर आप ध्यान से क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस करो ना, and if you have access to a lab, भाई मजा आ जाता है. बिल्कुल, it's the most fun thing to do in 11th 12th chemistry. अरे सब लोग तो यही समझते हैं ना कि डेक्स्टर लैब से कोई खेल रहा है आदमी केमिस्ट्री में. दिस इज एग्जैक्टली दैट क्वालिटेटिव एनालिसिस. खैर, यार दीपा दापिल, लाइफ एडवाइस भाई यार, कीप ट्राइंग यार. दैट्स आई रियली थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. अरे राघव, जो बनाएंगे बल जाएंगे, नो प्रॉब्लम. अरे ईबी, मैं रिप्लाई तो किया भाई, मुझे कैसे मालूम कि आपका क्या सिचुएशन है? आई विल ट्राई टू हेल्प यू, बट इफ यू आस्क समथिंग दैट्स सो जेनरिक, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट यार. मतलब इस चीज बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं. मालूम होता मैं आई वुड हैव हेल्प यू, राइट? That's not my area of expertise. Yeah? Okay, चलो. Hey, Sanoj. Okay, great. लैब में तो मजा आ जाता है भाई. So I'll tell you a small story in lab में, right? मेरा एक दोस्त था जो मतलब बहुत हरकतें करता था. I'll do this analysis. There are some chemicals. वो लिटरली सारे सॉल्ट डाल के, सब केमिकल डाल के स्कैम करके मार्क्स ले आता था. ठीक है, बट बहुत बहुत डांट खाया था वो फाइनल एग्जाम में. बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो द प्रोसीजर्स, द टीचर्स विल गिव यू सम थिंग्स दैट कुड मेस अप योर आंसर एज वेल. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक बहुत जरूरी चीज है कि यू डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप इफ यू एक्चुअली डू इट इन लैब, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स दैट कुड एक्चुअली शो यू मिक्स रिजल्ट. मतलब एक रिएजेंट दो चीज का दिखा सकता है. खैर, आई एम डाइग्रेसिंग. वो हम लोग बात करेंगे आराम से 7:15 वाले सेशन में. विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी. वी हैव अ होल 3-4 पूरा लंबा सेशन है उसके लिए. विल डू इट इन अ कपल ऑफ वीक्स टाइम. ठीक है, बट इसके अलावा और क्या है? अरे पॉइंट नंबर 6, इतनी ढेर सारी चीजें, बट लुक केयरफुली, ऑल ऑफ देम हैव ग्रीन लिंक्स इन इट. मतलब वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ देम. ध्यान से देखो, वी हैव डन ऑल ऑफ इट. जो सब लग रहा है ना, अरे ये नया आ गया, डर लग रहा है, कुछ नहीं है. वी हैव डन ऑल ऑफ इट. सी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने किया था. अब ये लोग बोल रहे CaSO4 के पढ़ लिया यार, ऑनलाइन देख लो CaSO4 में कैसे होता है, नो प्रॉब्लम. पानी डालो तो उसमें जो है वो ब्लू हो जाता है CaSO4. वी हैव डन फॉर मे बी NaCl. क्या फर्क पड़ता है? आइडिया सेम है. हाइड्रेशन होता है और पहले तो एसोसिएटेड वो लैटिस एंथैल्पी टूटता है, और दूसरा फॉर दैट यू नीड एनर्जी. देन जैसे ही पानी में डालो, हाइड्रेट हो जाता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है. अगर इन दोनों की एनर्जी का मेल जोल ऐसा होता है कि भाई द एनर्जी रिलीज इज मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड, बन गया सॉल्यूशन. दैट्स इट, दैट इज द थ्योरी. खैर, अगर आप देखना चाहो वीडियो देख लेना, इसका लिंक है. एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन, ये भी हमने किया है. थर्मो में भी किया है. कितना मजा आया था थर्मो पढ़ाने पर. थैंक गॉड थर्मो नहीं हटाया यार, मुझे दिल पे ले लेता अगर थर्मो हटा देते. खैर, ये वाला पार्ट, दिस वन रिमूव्ड सिलेबस. ओके, रिमूव पार्ट कौन सा था? दिस वन सरफेस. बट एनीवे, हमने इसको बहुत प्यार से पढ़ाया है, इसको भी. ठीक है, वी हैव डन दिस एंड देयर आर लिंक्स फॉर दिस एज वेल. EBR, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. आई थिंक यू हैव टू, जिस जहां पे आप जिन मतलब आई एम गेसिंग यू आर ट्राइंग फॉर नीट, राइट? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी. तो राइट टू नीट. ओके, एंड द बेस्ट थिंग इज मे बी गो टू रेडिट. रेडिट में एक बहुत ही अच्छा सब रेडिट है जहां पे लोग बहुत हेल्पफुल हैं. बहुत टाइम पास भी होता है, बट बहुत बहुत प्यारे अच्छे लोग भी हैं. आस्क देयर. ओके, यू नो विच सब रेडिट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू यूज रेडिट. डिस्कॉर्ड पे भी सेम नाम से चीजें हैं. I can't talk about it because it's not an official thing, right? It's an unofficial thing run by students, not a part of Aakash. But you know which one it is, check it out. ठीक है, वहां पे maybe we will be able to help you. Okay. दीपान्विता, क्यों पढ़े? Why do you want to study things that are removed? Chill करो, right? And they are the ones who are conducting NEET. It's their responsibility, right?
तो सो इफ दे आर सेइंग कि चीजें रिमूव हो गई तो चीजें रिमूव हो गई हैं, ट्रस्ट देम विद दैट। एंड एज ऑलवेज इफ समथिंग चेंजेस वी आर हियर विद यू, जो भी चेंज होगा कुछ भी होगा, लाइक वी डिड, आप ही ने तो मुझे बताया फ्राइडे शाम को कि भाई कुछ चेंज हो गया तुरंत करना, एंड वी फिगर्ड आउट, राइट, वील फिगर आउट टुगेदर, वील फिगर आउट, डोंट वरी। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है आयोडाइड आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डोंट वरी, ये भी हम लोग कर लेंगे। अभी तक जो हमने सेशंस किए वी हैव नॉट कवर्ड दिस, बट हम लोग कर लेंगे, उसमें क्या है, एक और नई चीज है। एनीवे, इज देयर एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट? दिस ऑल आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, आपको दिलासा देना चाहता था। We've got you covered on everything. I have given you clear plans on इसका. Right after this, we're going to qualitative analysis. ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बची, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली, ऑर्गेनिक का ये वाला पार्ट, वो भी हम लोग करेंगे। दैट्स इट। और जो पी ब्लॉक वाली बात है, दैट वी विल फिगर आउट विद टाइम। पी ब्लॉक वाली बात इज एक्साइटिंग क्योंकि काफी बार लग रहा है कम हो रहा है, विल फिगर दैट आउट विद टाइम, ठीक है। सो अगला सेशन है ये yeah, hey, there's me pointing with that same way, right? Okay, 7:15 pe we'll do this. Do you guys have anything else on your mind, or shall we just call this a day? Don't want to take too much of your time here. Already हम लोग आधा घंटा आराम से बात कर चुके हैं। Anything on your mind? कुछ और है जिसके बारे में बात करना है about all this? Organic chemistry से ईथर का चैप्टर हटा दिया, है? हटा दे तो, ओ विश्वजीत, are you hoping? अगर हटा दे तो बहुत अच्छी बात है, but I don't think अभी हटाया है, right? EB, yeah, dude, but अगर if I could, I would, sure. I would if I had any idea about this. मुझे इसी बार बिल्कुल आइडिया नहीं आ रही भी। गुड इवनिंग लखन, व्हाट्स अप? क्रिकेट ब्रो, कूल, ऑलराइट, चलो लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स नॉट वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम, चिल करो। 7:15 बजे फिर से मिलते हैं। आई लीव यू विद अ कूल, व्हाट डू यू कॉल इट, आई डोंट नो, जस्ट लाइक केमिस्ट्री बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री में बहुत केमिकल्स होते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट क्वालिटेटिव एनालिसिस अबाउट, ठीक है। आई विल मीट यू फॉर दैट एट 7:15 and see you soon, yeah, bye. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे? यही दीपान्विता, यही तो है। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें शायद लिखा नहीं है इसलिए आप पूछ रही हैं। क्या नहीं लिखा है यहाँ पे? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस। चैप्टर का नाम वही है, थंबनेल में लिखना हम लोग लिख देंगे, डोंट वरी, अगली बार लिख देंगे, ठीक है। आई विल सी यू गाइस एट 7:15। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस, आई होप दिस इज यूजफुल। दिस इज नॉट अ फ्लफ सेशन। आप डिस्क्रिप्शन में देखें, हर चीज का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। व्हेन आई शेयर दिस पीडीएफ विद यू, यू विल हैव द लिंक टू एवरीथिंग दैट एनएमसी हैज सेड दे विल डू, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आगे करने वाला प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का लिंक है इसमें, ठीक है। दिस इज नॉट अ टाइम पास सेशन, आई वाज हियर बिकॉज आई वांट टू tell you that boss, we've got you covered, and with some legit things, ऐसे हवा में नहीं कि हाँ भाई दिलासा दे रहे, नहीं, we are doing sessions, ठीक है। चलो 7:15 बजे मिलते हैं। I'll leave you with this funky amazing video, very short one, I'll play that for you now. Oops, yeah, there you go. Play कर जाओ भाई, bye, I'll let this play and then I'll end the session, ठीक है। See you guys 7:15. Okay, that was it. Yeah, some funky things made by our team here. Chalo, I'll see you at 7:15, okay? Bye, thanks for coming to the session. I'll see you soon. Good night. Oh, no, hold on. 7:15 मिलेंगे. No, good night. Bye.